Do you also use Blinkit, Swiggy, Instamart, Big Basket, or Zepto when in hurry? Yes, guys, these are known as quick commerce industry. Basically, these are the part of quick commerce industry. But now that अब आप मिस करते होंगे वो पुराने किराना स्टोर या वो लोकल मार्केट में जाकर चिप्स लाना rather than अब तो आराम से मार्केट से बैठे बैठे फटाफट कुछ भी हो ब्लिंकिट कर दो जेप्टो कर दो it's so easy. But it's not so easy when we look at the market as a whole, and there are a lot many players which are impacted by the new entrants and the emerging quick commerce market, which is what we are going to discuss today. Hi everyone, welcome back to Equipoise Classes. I am Surbhi Gupta, and in these videos we pick up one of the topics from newspaper and we read it directly from the newspaper. So if any one of you has this question that you're only reading, so guys, I'm not only reading, I try and explain every point word by word, line by line, and that's my motive basically, to bring authors emotion. See, author's point of view can be brought out even from the article to a presentation, but emotions cannot be translated, and a way of writing, the storytelling, the flow cannot ever be replicated in a presentation as which exists in the article. So I try and read it directly from the article, but my motive is again not that. I mean, that's not my primary motive. My primary motive is to make my students understand that how to read a newspaper, because majority of my students have this issue that they don't know from where to begin, what to pick up, what to leave, and they spend 2 to 3 hours in understanding that what to read, and maybe they read entire thing, and when after those 2 or 3 hours they don't know anything. So it is very important that we figure out that what to read, how to read, and how to basically complete a newspaper for the current affair aspect, and that's what we are going to do in these videos. So there are many victims of quick commerce, and that's what we are going to read today. Okay, so let's just quickly start with the article, because this is a huge article. But I found it very interesting because this talks of the real world scenario and how quick commerce is even impacting the e-commerce. So forget about the Kirana store owners. So that's what we are going to do. So basically, what is happening, that they are the worlds apart, but both Radhakrishnan Damani and Muhammad Shafiq find themselves battling a common enemy today. Okay, so this is Damani is DMart's owner, and he's also feeling the heat. What are we saying? We are just creating a setup first to go to the topic. Avenue Supermarts, Damani's Foods and Grocery Retail Chain, which operates nationwide, and City Food Point, Shafiq's small convenience store in Bengaluru's upscale Indranagar neighborhood, are under siege from quick commerce and a retail channel that came into its own during the COVID pandemic. Okay, so that is the impact. On 14th October, Avenue Supermart's share plummeted 9% on Bombay Stock Exchange, suffering their biggest single day drop since January 2019. Q, many brokerages downgraded the stock after retailers' second quarter numbers disappointed the street. So guys, कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, कंपनी की क्या हालत है, ये उसके शेयर प्राइसेस से पता लग जाता है. किसी के भी बहुत नीचे जा रहे हैं, इसका मतलब समझ आ जाता है कि वो कंपनी उतना अच्छा नहीं कर रही है. एंड वही हुआ यहाँ पे इस कंपनी के साथ. ठीक है, so it was a rude awakening for the company whose shares have returned over 125% to investors in last 5 years. Last 5 years में 125% return दी है इसने इन इसके shares ने, और आज इसका बुरा हाल हो रहा है. So one seen as a trailblazer of sorts in offline food and grocery retail, along with Big Bazaar, Avenue Supermarts, which started out in 2002, operates 377 DMart stores across multiple states today, may be paying the price for not responding to the threat from quick commerce. इन्होंने quick commerce को ऐसा threat नहीं देखा, इन्होंने उसकी तरफ respond नहीं किया, और आज वो इसीलिए suffer कर रहा है. ठीक है, in a static tone, brokerage Morgan Stanley said, "We have been defending DMart's business model for a while. However, we now believe that the company's slow response to steadfast market changes toward convenience is starting to hurt the business," it added. We know DMart management didn't view this growth of quick commerce as much as an issue a couple of months ago. We believe aggressive scaling strategies from quick commerce players are hurting brick and mortar businesses, implying further deterioration in operational metrics could be coming up. So it's not that I'm being a reader of the article.
what is important to understand is that DMart or these stores did not feel the heat back then a couple of months ago, when they did not they take the quick commerce people as a threat, and they thought that no, the quick commerce is still a very small percentage of the population, or catering to less states, as opposed to people or the population which is there, which still goes to the kirana stores or supermarkets. But trust me when I say this, back then, I don't even remember the year now. Pre-COVID, it used to happen that I used to go with my father to these stores to get biscuits, and monthly ration le aate the hum log of the biscuits which we used to like, the chips, the snacks we used to munch on, and then sabka ek ration aa jata tha, coke and all. And these days, even if you don't have it, you can just quickly, in the blink of an eye, that is why I blink it. So you just blink it and Blinkit is here. So that's the thing. By the way, Blinkit was earlier known as Grofers, and now Blinkit is a subsidiary of Zomato, and Swiggy Instamart is of Swiggy itself. So now these days we quickly, that is why we call it quick commerce, because we just very in hardly 5-10 minutes we get everything at our disposal. For example, I'll tell you a very recent example. The kajal I'm wearing today, I didn't have a kajal per se of my own, and I ran out of the kajal that I already had, which stood by me during 6 months, 7 months. I had a small kajal. Now it got finished today, and I had to record. And when I wear Indian, I feel kajal enhances your eyes and look. So I wanted a kajal, and what to do? So I quickly ordered kajal from Swiggy Instamart. Imagine. So these are the days, and back then we used to go to a market, or the superstore, and वो भैया को बोलना, भैया आजकल कौन सा काजल ट्रेंडिंग में चल रहा है, दे दो मुझे, याद भी नहीं एक्चुअली, ये सब काम पेरेंट्स करते थे. My mom used to do it for me. But yeah, I feel that time has really evolved post pandemic. So we are in the era of pre pandemic and post pandemic, and things have changed. So yeah, we come back to the article. ICICI Securities, another brokerage firm, expressed a similar view, noting that accelerated ramp up online grocery formats, quick commerce in large metro cities led to deceleration of key growth metrics in DMart. So we are specifically talking about DMart. We are just taking it as a base, but many industries are definitely, that many companies are being impacted in this industry, or in this segment, which are affected by the quick commerce industry. So the rapid growth of instant delivery companies like Blinkit, Swiggy, Instamart, Big Basket now, and Zepto is posing a threat to offline retailers and online marketplaces, large and small, right from Avenue Supermart and Amazon down to the vegetable vendors and your local grocers. So even Amazon is impacted. You would know कि Amazon ने भी एक नया शुरू किया था, Amazon Fresh करके. अब वो नहीं चलता, वो एक टाइम लिमिट दे देते तब तक ऑर्डर होगा. आज तक उतनी पेशेंस भी नहीं रही है लोगों में. So yeah, that's the scene. And small shops feel the heat. So the proliferation of Q-commerce dark stores. Q-commerce, quick commerce, dark stores, because अब आप सामान ऑर्डर करते हो, वो कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, वहाँ कैसे स्टोर किया है, वहाँ आप नहीं जाते, वहां से आप तक पहुंच जाता है. अर्लियर स्टोर्स में आप जा सकते थे. दैट इज व्हाई वी आर कॉलिंग इट डार्क स्टोर्स. By March 24, Blinkit had 526 and serviced 26 cities. Swiggy Instamart had 523 dark stores and in 27 cities, may pale in comparison to the over 12 million किराना स्टोर्स. 12 मिलियन किराना स्टोर्स है इंडिया में, लेकिन फिर भी ये वाले टोटल मिला के 1000 स्टोर्स हमें तंग कर रहे हैं. 1000 डार्क स्टोर्स. ऐसा क्या हो रहा है? बेसिकली ये चीज मतलब बहुत अच्छे से आप अगर समझेंगे तो सिर्फ नंबर ऑफ स्टोर्स नहीं मैटर करते, जो कंफर्ट और ईज मिल रही है, जो एक बिगड़ने की आदत होती है. बिकॉज वी ऑलवेज से अच्छी आदत. सो सी, आपको कोई हैबिट लगानी है, आपको सुबह जल्दी उठना है, अर्ली मॉर्निंग, आपको एक्सरसाइज करनी है, आपको हेल्दी ईटिंग करनी है, तो इसके लिए तो आपको हैबिट फॉर्म करनी पड़ती है. इट इज नॉट सो इजी फॉर यू इन योर माइंड, बिकॉज दीज आर द थिंग्स that you have to struggle to do, and you don't like doing it. It would be beneficial for you, that's a different ball game altogether, but you don't like per se doing it, right? But on the contrary, if I tell you have to eat pizza every day, you have to eat burger every day, and you have to sleep every day, eat, sleep, do whatever you want to. And more so, if I give you the comfort that stay home and एक
लिटरली मनी का ट्री लग जाएगा बाहर, पैसे आते रहेंगे आपको, या आपकी एक स्ट्रीम ऑफ इनकम चालू रहेगी. यू डोंट हैव टू वर्क, यू जस्ट सिट, एंजॉय, बिंज वॉच सीरीज एंड स्लीप एंड हैव फन, एंजॉय योर लाइफ. एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, कुछ टाइम बाद इतनी गंदी आदत लग जाएगी ना कि उसके बाद दोबारा काम करना कितना मुश्किल हो जाएगा, एंड यू विल बी addicted to the comfort, which is what we are saying कि they are making you addicted to the comfort. They are delivering comfort actually. They are not. So 12 million kirana stores versus 1,000 stores. It's not the case. The case is of delivery of comfort. Okay, that's in my terms. We'll read the article. In Bengaluru, for instance, Shafiq has noticed 20 to 25% decline in sales and foot traffic at his convenience store since last October. A loyal customer base relying on the store for everything from daily essential like milk and curd to a monthly supplies of rice and wheat flour had kept it thriving until riders dressed in yellow and orange and purple began zipping अबाउट द नेबरहुड है. वो जेप्टो वालों डिलीवरी बॉयज की बात कर रहे हैं. सो नॉट विलिंग टू सिट बाय आइडली, शफीक ने ना सोचा कि शफीक को लगा कि कंपटीशन बढ़ गया. जब उसने डिलीवरी वालों को देखा, उसने कहा मैं क्या कर सकता हूँ. सो शफीक का केस मैं बता देती हूँ. तो शफीक ने कहा कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं भी एक काम करता हूँ, मैं भी अपने किराना स्टोर पे डिलीवरी बॉय रखता हूँ और 5 किलोमीटर के रेडियस में मैं भी गुड्स पहुंचा दूंगा लोगों के घर पे. कंफर्ट डिलीवर करना है, मैं भी कंफर्ट डिलीवर कर दूंगा. पर खाली कंफर्ट डिलीवर का मतलब नहीं होता मैंने सामान ऑर्डर किया मुझे मिल गया. कितनी बार आपने नोटिस किया होगा, आप ब्लिंकिट ओपन करते हो, आप स्विगी इंस्टामार्ट ओपन करते हो, कुछ चीजें आपको दिख जाती है जो आपके माइंड में नहीं होती आपको चाहिए, बट अब आपको दिख गई कि ओ ये भी अवेलेबल है, सो यू मे स्टार्ट ऑर्डरिंग दैट. ओके, आपके माइंड में, आप फॉर एग्जाम्पल आपके माइंड में था कि दिवाली आ रही है, मैं कैडबरी का गिफ्ट बॉक्स, चॉकलेट गिफ्ट बॉक्स ऑर्डर कर दूंगी. बट जैसे ही आप ब्लिंकिट या स्विगी इंस्टामार्ट पे गए, आपको दिख गया कि गैलेक्सी जूल्स करके आ गया है, या अमूल की चॉकलेट्स आ गई हैं, अमूल की सेंटर फिल्ड लिक्विड फिल्ड चॉकलेट्स आ गई हैं, ठीक है, थियो ब्रोमा का गिफ्ट पैक अब मिलने लगा है वहां पे. सो आप सोचोगे यार बाय नॉट ऑर्डर दिस इंस्टेड ऑफ दैट. ऑप्शंस दिख रहे हैं ना. सो कंज्यूमर डोंट गेट टू सी द ऑप्शंस ऑफ अ किराना स्टोर जहाँ पे एक डिलीवरी बॉय आ रहा है. प्लस शफीक को ये प्रॉब्लम होने लगी कि कॉस्ट बढ़ गई चीजों की. ठीक है, शफीक के लिए डिलीवरी पर्सन रखना पड़ेगा. ऑन एन एवरेज 10,000 का डिलीवरी बॉय आएगा, उसको 10,000 तो पे करोगे आप मंथली उसकी सर्विसेज के लिए. पेट्रोल का खर्चा लगेगा, गाड़ी का खर्चा लगेगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, टाइम कॉस्ट, मैनेजमेंट टेकिंग, फिर खाना खिलाओगे, कुछ तो करोगे, चाय पानी, तो हर चीज का कॉस्ट ही बढ़ रहा है शफीक का. शफीक ने कहा ये तो काम नहीं हो रहा, सो ये तो मुझसे नहीं हो पाएगा. ठीक है, काइंड ऑफ लाइक हमसे ना हो पाएगा. तो शफीक ने कहा नहीं, ये तो दिस इज नॉट वर्किंग आउट. ठीक है, so he had to shut down the delivery to save what little he could make. Okay, so last month industry body All India Consumer Product Distributor Federation wrote to Trade and Industry Minister expressing concerns over the popularity of quick commerce. Their concerns were simple, that quick commerce platforms are increasingly becoming direct distributor for major FMCG companies, sidelining traditional distributors and threatening livelihood of small retailers. So पहले क्या होता था, ये FMCGs जो हैं ये यहाँ से एक ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, बिग डिस्ट्रीब्यूटर्स, एंड ये रिटेलर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं प्रोडक्ट इनसे लेके, ये मीडिएटर्स होते हैं. ठीक है, सो ये क्या करते हैं, अब यहाँ पे ये डायरेक्टली यहाँ से स्विगी, ब्लिंकिट और क्विक कॉमर्स चल रहा है और आप और हम तक पहुंच रहा है. तो अब क्या हो रहा है, कौन इम्पैक्ट हो रहा है, ये भी इम्पैक्ट हो रहा है, ये भी इम्पैक्ट. क्लियर, इजी, ओके. The market has gone down as far as Competition Commission of India. तो Competition of Commission of India तक भी पहुंच गया मैटर, एंड ये बोला गया कि क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म सच एज ब्लिंकिट एंड जेप्टो, इनके से परेशानी हो रही है आपको, एंड क्या हो रहा है कि कंप्लेन्स आ रही है लोकल रिटेलर से. ओके, सो मॉम एंड पॉप स्टोर्स आर एक्चुअली गेटिंग इम्पैक्टेड. ओवरऑल कंजम्पशन ग्रोथ इज नॉट बिग इनफ टू अकोमोडेट मल्टीपल प्लेयर्स सर्विसिंग द डिमांड. Okay, there is clear stress in kiranas for sure, because they were the go-to shops for top-ups and emergency supplies, like but अभी किराना स्टोर्स को सबको दिक्कत हो रहा है. It is a big challenge for them. Okay, at least in big cities or top 12 cities where 90% of quick commerce is happening, that business model is looking increasingly challenging for all the kiranas. Okay, so while Zepto revenue grew multifold in financial year 23, its losses also spiked nearly 3 times. Okay, Blinkit, now a Zomato subsidiary, turned adjusted EBITDA positive
only this March, and more than a decade after its inception as Grofers, signaling the uphill task for building money-making quick commerce business. That means it is not easy. जो easy आपको दिख रहा है वो इन companies के लिए भी easy नहीं है. While quick commerce offers immediate convenience, that's the term, immediate convenience provide तो कर रहे हैं. Its long-term sustainability could be challenged by rising operational costs. For them also, operational costs are huge. Okay, so that's a problem. So dark store kya hai? What is the dark store? As I said, the dark store is replacement of your neighborhood kirana, the quick commerce of today. So ये भी है कि the quick commerce जिसको हम आज कह रहे हैं ये पहले ही आ चुका था. ठीक है, पहले लॉकडाउन से पहले क्या था कि companies such as Dunzo and Grofers ferried goods from stores to consumers, and the momentum picked up post-COVID with entry of Zepto and Swiggy Instamart. जबकि ये पहले भी था जब कोई लोकल डिलीवरी वाला, जैसे शफीक का डिलीवरी वो आप तक डिलीवर कर देता, बस किराना स्टोर्स वाले आपको डिलीवर कर जाते थे कि भैया अच्छा आप इसी ब्लॉक में रहते हैं, चलो इन ब्लॉक पे तो ये पहुंचा देगा इस सामान तक. सो माई ग्रैंडफादर, सो द ब्लॉक वेयर आई पुट अप एंड माई ग्रैंडफादर यूज्ड टू गो टू आवर लोकल मार्केट, एंड वो जो भी सामान थे लिखवा देते थे एंड उनका डिलीवरी बॉय पहुंचा देता था, बिकॉज माई ग्रैंडफादर कुड नॉट पिक अप सो मच ऑफ स्टफ, राइट. सो वो बस बोल के आ जाते थे और सामान आ जाता था. तब भी तो यही था, कन्वीनियंस था. लेकिन अब और तब में क्या चेंज आ गया? द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी. अब हर चीज टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है. अब मेरे अगर दादू होते, सो अभी ही इज नॉट नो मोर, बट अगर मेरे ग्रैंडफादर होते सो डेफिनेटली अब वो किराना स्टोर पे जाके उसको नहीं बोल रहे होते. मुझे तो लगता है उनको मोबाइल यूज करना बहुत अच्छे से आता था, तो वो हमसे ज्यादा स्विगी एंड उस पर लगे हुए होते. सो रिसेंटली आई केम अक्रॉस माई फादर, वेर अर्लियर ही यूज्ड टू डिपेंड ऑन मी कि ब्लिंकिट और स्विगी से ये ऑर्डर कर दे वो ऑर्डर कर दे. अभी कुछ दिन पहले मैंने देखा उन्होंने अपना जीपे अकाउंट बनाया है खुद ही. पहले वो इतना, बिकॉज आवर पेरेंट्स जनरेशन इज नॉट सच कि वो ऑनलाइन पेमेंट में इतना करें, वो कैश ही लेके चलने वाले लोगों में से ज्यादा है. But he recently opened up his account and he was quick enough कि उन्होंने nowadays he comes up to me and asks Blinkit से कुछ चाहिए, Zomato में ऑर्डर कर रहा हूँ तो अगर कुछ चाहिए बता दो, डिलीवरी फीस उतनी लगेगी ना, तुम्हारे मल्टीपल ऑर्डर्स में डिलीवरी फी अलग अलग नहीं लगेगी. लाइक ओ गॉड. सो दिस इज हाउ वर्ल्ड इज चेंजिंग. दैट्स अ रोल ऑफ टेक्नोलॉजी, सो वही आ गया. अदरवाइज किराना डिलीवरी वाले भी आते थे हमारे घरों में, राइट right? तो उसके एक्स्ट्रा 10 रुपीज ले लेते थे या कुछ ले लेते थे, तो नहीं होता था. So in New Delhi, 31-year-old Pari Sarna, who lives in an apartment complex, finds it hard to shop at a store regularly and has come to lean on quick commerce for her supplies. Her most recent orders, which included soap, toothpaste, and a snack to justify delivery fee, would have typically been purchased at a nearby store. However, the convenience of being at home and getting the things delivered is much more comfortable. So for large monthly orders, I still use supermarket or an online marketplace, but it's good to have an option when I am out of time and the guests are over. So जब भी गेस्ट आ गए फटाफट से कुछ चाहिए आपको, तो ये चीजें काम आती हैं. तभी आपने देखा होगा कि आइसक्रीम्स ऑर्डर करना भी आप नॉर्मल किसी जगह से ऑर्डर करो एंड वही ब्लिंकिट एंड स्विगी से ऑर्डर करो तो फटाफट बेसिकली इतनी जल्दी आती है ना चीजें कि यू नो दैट. एंड नाउ तो जोमैटो और इन पे ब्लिंकिट पे स्विगी इंस्टामार्ट पे ड्यूरिंग रक्षाबंधन एंड ड्यूरिंग फेस्टिविटीज आई हैव सीन बहुत चीजें, गिफ्टिंग ऑप्शंस, एंड ई वॉचेस, गेम्स, स्टेशनरी एंड इवन ज्वेलरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, इतनी क्या क्या आ चुका है. लाइक मे बी इतनी तो मैंने देखा नहीं है, सर्फिंग नहीं किया, बट देर आर सो मेनी थिंग्स. वो हर डोमेन लाते जा रहे हैं अपने आप पे ना. सो रिच शॉपर्स आर हुक्ड टू कन्वीनियंस these platforms offer, and this is prompting bigger shift in the retail ecosystem. Okay, so Big Basket announced shift away from slotted deliveries to quick commerce. Nykaa is piloting express delivery via Nykaa Now in select locations. Flipkart has started quick delivery under Flipkart Minutes in select markets in Bangalore. So इन्होंने pilot project चला दिया. Nykaa Now ने ऑल दीज आर पायलट प्रोजेक्ट. पहले ये टेस्ट करता है कि ये वर्क करेगा भी नहीं करेगा पैन इंडिया लॉन्च करने से पहले, एंड कुछ सिटीज में पहले करता है जहाँ पे कन्वीनियंस है. जैसे फ्लिपकार्ट मिनट्स अभी दिल्ली में तो मैंने नहीं देखा, बेंगलुरु में आ गया है, एंड ऐसे ही नायका नाउ है, मैंने यहाँ पे तो अभी नहीं देखा, बट मे बी आ गया है कई जगह. सो मैंने ऑर्डर भी नहीं किया तो मुझे नहीं पता, बट या. Okay, so where the action is.
सो अभी एक्शन किधर है आपका एफएमसीजी गुड्स में? आपको ये देखना पड़ेगा कि ग्रॉस वैल्यू जो है, जो आपकी नॉन ग्रोसरी आइटम्स और ग्रोसरी आइटम्स कितना कंट्रीब्यूट कर रही है क्विक कॉमर्स में, ठीक है? सो कंज्यूमर्स असाइड, ब्रांड्स आर आल्सो लैशिंग ऑन क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म। ब्रांड्स भी आना चाहते हैं, जैसे मैंने कहा कि बहुत सारी चीजें आ रही है क्विक कॉमर्स पे, मेकअप आता जा रहा है। मैंने कहा ना मेबेलिन, आज मैंने काजल ऑर्डर किया है, तो ब्रांड है पूरा का पूरा, ठीक है? सो जितने भी ये लोग आते हैं, तो टेक्नोलॉजी, आपने शार्क टैंक इंडिया में देखा होगा कितने लोग आते हैं, और फिर जब भी आप देखना शार्क टैंक पे कोई आया ना, वो कुछ टाइम बाद आपको ब्लिंकिट पे, अगर उसको उसके ओनर ने लिया है, या फिर स्विगी इंस्टामार्ट पे, या कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाएगा, क्योंकि वो ऐसे ही टेक यूज करके ग्रो कराते हैं आपके बिजनेस को, ठीक है? सो या दैट्स द सीन. For instance, Hindustan Unilever, the country's largest listed consumer goods company, said 10% of its ice cream sales now come from quick commerce. अभी मैंने आइसक्रीम बोला था तो आई डेंट नो कि ये एग्जांपल है, मैंने हाईलाइट नहीं किया तो वो स्किप हो गया. इतना बड़ा आर्टिकल है गाइस. Yeah, but okay, in December 22, non-grocery items contributed 20% to the gross value merchandise of quick commerce platforms. This increased to 30% in December 23. Then for various companies, anything from 30 to 50% e-commerce sales are now beginning to come from quick commerce. E-commerce से जो होती थी वो अब quick commerce से आ रही है, ठीक है? बहुत मेजर सेल्स, एंड मोस्ट प्लेटफॉर्म सोल्ड रिसेंटली लॉन्च आईफोन 16 ठीक है? ये भी सेल किए. बिग बास्केट हैज पार्टनर्ड विद क्रोमा, यानी बिग बास्केट क्रोमा के साथ है, कुछ भी डिलीवर कर देगी. जेप्टो रिसेंटली पार्टनर्ड विद Decathlon India to expand its sporting good category. It has been expanding to high growth categories such as toy, beauty, cosmetics, low ticket jewelry. God, I took up all these examples because मैंने आज ही मॉर्निंग देखा ये सब, राइट? सो या देन दैट्स इट. फूड एंड, सो ये फूड और ग्रोसरी नहीं है, ये अलग अलग सेगमेंट्स में जा रहे हैं, जान के हर किसी को कन्वीनियंस मिले यार. लोगों को बिल्कुल ही घर बिठा देंगे ये लोग, चाहेंगे ही नहीं है वो मार्केट तक उठ के जाए थोड़ा बहुत भी, और जाके कुछ देखें आसपास, राइट? So food and grocery will continue to remain paramount to driving their sales. See, 80 to 85% of the use cases of the consumers are more logical ones, food and grocery, ठीक है? But 10%, 10 to 15% प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो हुक कर देते हैं, लॉयल बना देते हैं कंज्यूमर को कि यार ये अच्छा है, ठीक है, यहाँ पे मुझे मिल गया. ओके, बिकॉज एज आई सेड, एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं काजल का वेट करती, वो मैक्स मतलब अर्लीस्ट कल डिलीवर होता है, परसों डिलीवर होता है, वो ब्लिंकिट से फटाफट, ब्लिंकिट, स्विगी, इंस्टामार्ट से फटाफट डिलीवर हो गया. ओके, सो आई एम नॉट प्रमोटिंग per se, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू व्हाई आई यूज स्विगी इंस्टामार्ट एज कम्पेयर टू ब्लिंकिट, बिकॉज ब्लिंकिट पे डिलीवरी फीस ज्यादा है, स्विगी इंस्टामार्ट पे डिलीवरी फीस हार्डली 7 रुपीज, 7.5 रुपीज है, जो कि ब्लिंकिट से तो सस्ती है. जेप्टो देखो अभी तक मैंने कभी यूज नहीं किया है, सो मैं उसके बारे में बोल नहीं सकती. अगर अच्छा है तो कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं नेक्स्ट टाइम पक्का जेप्टो डाउनलोड करके उसको भी यूज करके देखूंगी. ओके, या big city phenomena. Online retail accounts for 5% of overall retail market today and is expected to grow 8% to roughly $169 billion by 2028, with quick commerce set to play a major role in that growth, right? So ये growth बहुत ज्यादा होगी. And then while quick commerce companies are taking steps to expand beyond top metros, those cities will still account for bulk of their gross value order. And for instance, year 2024 में 90% of Blinkit's gross market value came from top 8 cities. 90% जितना भी आ रहा है वो top 8 cities से आ रहा है. Zomato subsidiary now looking to take total dark stores count to 2000 by 2026. 2000 stores बना देंगे, अभी 500 समथिंग थे, 2000 पे ले जाएंगे सीधा, ठीक है? स्विगी विच इज, अब स्विगी भी सेट है भाई. स्विगी कह रहा है कि हम भी, जोमैटो ने तो किया ही था, आईपीओ लगा के फंडिंग ली थी, बट स्विगी भी इज ऑल सेट कि आईपीओ निकालेगा अपना, यानी लिस्टिंग होगी उसकी, एंड वो शेयर मार्केट में लॉन्च होके जो भी उसको प्रॉफिट होगा, बेनिफिट होगा, उससे और ज्यादा एक्सपैंड कर सकता है अपना क्विक कॉमर्स बिजनेस, ठीक है? सो दैट्स द सीन. एंड देन द एंट्री ऑफ लार्ज ई कॉमर्स कंपनीज सच एज Amazon has faced resistance from existing retailers, especially in categories such as smartphones. So ye wala bhi, that's also another thing. And then if we want to conclude, for instance, open network for digital commerce, the country's network of e-commerce buyers, sellers, and everyone in between is meant to democratize online commerce and eliminate any monopoly. Okay, so there, just like ONDC, it's possible
that many such platform will come up to formalize किराना नेटवर्क. हो सकता है अब ये ऑप्टिमिज्म तो देंगे यार एंड में कि किराना को फॉर्मलाइज कर दो. किराना अभी भी मेजोरिटी है, 12 मिलियन है, बाकी तो अभी गिनी चुनी कंपनीज है, बट और भी बहुत कुछ हो रहा है मार्केट में, खाली इतना नहीं हो रहा है. जैसे कि अगर आप यहाँ देखोगे तो ये बता रहे हैं डिलीवरी टाइम किसका सबसे कम लगता है. अब आपको देखने को मिलेगा सबसे कम ब्लिंकिट का लगता है, स्विगी इंस्टामार्ट का थोड़ा ज्यादा. मैं कहूंगी दोनों का बराबर ही लगता है, मुझे तो स्विगी इंस्टामार्ट का ज्यादा कम लगता है. मे बी मैं बायस हूँ थोड़ा इसकी तरफ. ठीक है, वही डिलीवरी फीस की जो मैं बात कर रही हूँ. मिनिमम ऑर्डर वैल्यू फॉर फ्री डिलीवरी, ये बस बोल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है. ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, मैं देखती हूँ तो ऐसा तो नहीं है. फ्री डिलीवरी तो कहीं नहीं, प्लेटफॉर्म फी, ये फी वो फी 10 फी लगा देते हैं. ओके, और इन, हाँ बाय द वे, क्विक कॉमर्स वाले लोगों, हम लोग भी, मतलब मैं भी क्विक कॉमर्स हम यूज तो कर रहे हैं, बट क्विक कॉमर्स में सारी चीजें महंगी मिल रही है. जो एक रजिस्टर अभी मैं लाई हूँ होलसेल मार्केट से, एंड वो रजिस्टर 50 रुपीज का है, जो ब्लिंकिट पे 150 रुपीज का पड़ रहा है. मैं कंपैरिजन बता सकती हूँ. तो इतना ऊपर से प्लेटफॉर्म फी, टैक्सेस, डिलीवरी फीस, पता नहीं क्या क्या. ठीक है, सो ये बता रहे हैं आपको, एंड ये बता रहे हैं कि हाउ बिग इज क्विक कॉमर्स ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू. देख लो, ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू क्या होती है, इज द वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज सोल्ड. सो टोटल वैल्यू अभी जो है वो 6 बिलियन है डॉलर, और ये एक्सपेक्टेड है 2015 तक 9.4 बिलियन डॉलर होने की. हाइपर ग्रोथ भी हो रही है जैसे कि आप देख सकते हैं. एंड फास्ट मूविंग क्विक कॉमर्स फर्म्स जो है वो धीरे धीरे लार्ज सिटीज में कैसे ग्रो हो रही है. 27 सिटीज में स्विगी इंस्टामार्ट है, ब्लिंकिट जो है आपका 26 में, 17 में जेप्टो है. नंबर ऑफ डार्क स्टोर सबसे ज्यादा किसके, आपके अगेन स्विगी इंस्टामार्ट ज्यादा सिटीज में है, ब्लिंकिट के ज्यादा है हालांकि. स्विगी इंस्टामार्ट के 523 है, 250 इसके हैं. एंड देन एज यू कैन सी, अभी बेस बेस जो ग्राफ है हमारे कंपैरिजन के, वो जोमैटो, आई मीन ब्लिंकिट, स्विगी इंस्टामार्ट एंड जेप्टो के. ठीक है, with that I think you can read this what and but scenario, but we have completed this article. The gist of the article I would say is my throat is hurting bad. इससे पहले मैंने एक और वीडियो रिकॉर्ड की है 50 मिनट्स की, तो या बट या पार्डन मी फॉर दैट. आई बिलीव वेयर आई वाज, या आई वाज सेइंग कि हमारा जो क्रक्स था इस पूरे आर्टिकल का वो ये था कि हम लोग क्विक कॉमर्स इंडस्ट्री जो है, पहले ई कॉमर्स आई, उसके बाद हम ग्रो करे करे, एंड अब क्विक कॉमर्स आकर सिर्फ फूड एंड ग्रोसरी में ही नहीं बाकी सेक्टर्स में भी आ रही है, एंड वो रैपिडली ग्रो कर रही है. सो इवन आप ट्राई करोगे बहुत चीजें, बट एक मेजर इकोनॉमी का चंक जो है वो इम्पैक्ट होने लगेगा आफ्टर अ वाइल. अभी तो ये टॉप सिटीज में है, ठीक है, 27-26 सिटीज में, लेकिन जैसे जैसे ये ग्रो करेंगे टियर 2 सिटीज की तरफ, तो और किराना स्टोर्स इम्पैक्ट होंगे. कहीं लोगों का तो नॉर्मल लाइवलीहुड ही इससे आता है. ठीक है, माना पॉपुलेशन बहुत है, और अभी भी मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन विलेजेस एंड रूरल एरियाज में रहती है, बट स्टिल वी नीड टू बी माइंडफुल बिकॉज फोन इंटरनेट सबके पास है. यू नेवर नो कि आज जो चीज इतनी ग्रो हो गई है वो और अगले 2 साल में कहाँ कहाँ तक पहुंच जाएगी, पेनिट्रेट कर देगी. So we need to be mindful of all the activities which are happening, and even the Competition Commission of India and the organization should be mindful and careful. And with that, we have come to an end of this video. कोई भी वैल्यू एडिशन लगा हो, नॉलेज मिली हो, कुछ नहीं तो मजा आया हो देख के, सो लाइक कर दो, शेयर कर दो. आपको लगता है कि किसी और को भी हेल्प होगी, सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाना. एंड थैंक यू सो मच फॉर शोइंग so much of love to Equipoise classes and this series. Truly means a lot. I'll see you with another one tomorrow. Till then, take care. Be happy, stay healthy, keep smiling, spread positivity all around you. Take care. Bye bye.